Hello everyone, welcome to PT Reading Filling the Blanks Real Exam Question Series. 41st video in this series. It means कि हम already 40 questions discuss कर चुके हैं which have come in real PTE exam for our students, and we discuss the reading hacks, tips and tricks कि how we can solve reading filling the blanks. First things first, now PT is accepted for UK and 90% of universities now accept PT academic, and a new test which is PT home has been started. So if you are looking for family visas in UK, you can achieve it through PT home. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT. Now a question students ask कि क्या सर हम भी कर सकते हैं अपना target score achieve? The answer is big yes, because अगर आप वही strategies follow करेंगे which we teach you, as well as आप grammar की tips and tricks which you are going to see, you are going to follow them. No doubt in that you can also achieve your target score. So that's why do not forget to subscribe to our channel, because we post such informative videos on a regular basis. Now PT reading is of 32 to 41 minutes and it has integrated timer. It is not scored out of 90. Yes, students think that जो PT की reading है it is scored out of 90. The answer is no, it is scored out of 47 to 48 marks, and it has 5 question types, the order for which is fixed, and reading filling the blank is your 4th question type in this order. So this is the real PT reading scoring. If you see, the reading module just contributes 47 marks, and usme reading filling the blanks are of 15 marks. So if you are getting 5 RFIBs, then they will be of 3 marks each. Okay. So that's why they are important for your target score. चाहे आपका target score 7 bands हो, 8 bands हो, or 6 bands हो, you have to make sure कि you are focusing on reading filling the blanks. Now, what is our strategy? First of all, through big data analysis and artificial intelligence analysis, we could find out that you have to spend just 2 to 2.5 minutes only. Yes, इससे ज़्यादा time you cannot spend on solving one reading filling the blank. अब इस time period में क्या आप सारे words पढ़ के मतलब समझ सकते हो, and then can you solve your reading filling the blank? The answer is no. What you need to do is you have to do skimming, and we teach skimming to our students who take online coaching or are in our institute. Now this is today's topic, and as usual I'm going to give you 30 seconds to skim through this, and then we are going to discuss it. Okay, so first thing which we do is we skim our reading filling the blanks to understand the tone, positive tone hai, negative hai, neutral hai, as well as to understand the gist, the overall central idea kya hai. And then what we do is we look for parts of speeches classification. जो हमारे answers दिए होते हैं उनकी parts of speech classification करते हैं. And remember, what we do is we do the reverse engineering. Yes. हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते हैं, हम ऑप्शन से आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, राइट? इट गेट्स इजी टू सॉल्व दिस वे. So let's get started. First, let me quickly skim it so that you can also see how I'm skimming it. Many people today think culture is that we thought of Europe during the 18th and 19th century. This something of culture reflected inequalities and their colonies around the world. This understanding of culture equates culture with civilization, in contrast with both nature and non-civilization. According to understanding of culture, some countries are more something than others, and some people are more cultured than others. Anything that doesn't fit is a chaos or anarchy. From this perspective, culture is closely tied to cultivation, which is progressive refinement of human something. In practice, the culture referred to elite goods and activities such as haute cuisine, high fashion or haute court, museum caliber art, classical music. Culture people who took part in these activities. Someone who used culture in this sense might something that classical music is
more refined, okay, working class people such as jazz or indigenous music traditions of aboriginal peoples. Okay. सो यहाँ पे आपका कल्चर से रिलेटेड बात हो रही है, सिविलाइजेशन से रिलेटेड बात हो रही है. ओके, सो दिस इज आर जस्ट. अब मैंने कुछ यहाँ पे स्टार्स मार्क किए हैं. क्यों मार्क किए हैं? द रीजन फॉर देम इज दिस बिकॉज this may help you in your vocab as well as grammar, right? We have to improve our grammar and vocab also along with solving them. So what is chaos or anarchy? This is disorder, मतलब कि कुछ भी order में नहीं है, civilized manner में नहीं है. Okay, hot cuisine. अब ये जो hot है, maybe I'm wrong or right, but this is French origin word, so it's like high cuisine, fine dining. ऐसे ही hot pot is your high street fashion. अब इंडिजिनस क्या होता है? आजकल जब वैक्सीन बनी हैं, कोरोना की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, स्पेशली इंडिया में इंडिजिनस वैक्सीन है, मतलब उसी कंट्री में डेवलप हुई हुई जहाँ के या यूज़ होना है. Aboriginal. Those students who are in Australia might be aware of this term. Aboriginals, वहाँ पे बहुत ज़्यादा term use होती है. Aboriginals are basically people. See, Australia was once like it was not inhabited by Europeans. उनसे पहले जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे, उनसे पहले जो लोग वहाँ पे रहते थे, उनको हम Aboriginals कहते हैं. Now, why I have put a star on working class people? Because this is our grammar rule, right? What is that grammar rule? This is an adjective and these are more than one word. That's why we are going to use hyphen. So more than one word are acting as one adjective for a noun. So that's why we are going to use hyphen. Okay. Now the next thing what we need to do is classification of parts of speech for options. You are going to see kitna important hai. But what is behavior? Behavior is a noun. Concept. What is concept? Concept is again a noun. And second thing, अब अगर आपको ये classification नहीं आती, we have our complete grammar course where we teach all these concepts to our students. Argue. Argue करना. जब भी कोई चीज़ कर रहे होते हैं क्या हो जाती है? Verb. अब progressive. For example, progressive behavior, progressive situation. So progressive is your adjective. Rare. Rare idea. Rare gem. So again, adjective. Combine. राइट कोई चीज कंबाइन करना, अगेन कंबाइन हो करना आ गया वर्ड, रिफाइन करना आ गया वर्ब. सिविलाइज्ड, अब स्टूडेंट्स को लगता है सर ईडी है तो वर्ब हो सकती है, बट सिविलाइज्ड इज जनरली एडजेक्टिव, राइट? civilized person, this is how we say. Stayed, अब ed है, stay का past form है stayed, so यहाँ पे क्या है? Verb. So what we have done is parts of speech classification, जिसमें we have seen, we have adjectives, right? We have verbs and nouns. So now let's see the blank and we will see how important that parts of speech classification will be. So this something of culture, right? अब this क्या? This is a pronoun, okay? अब ये pronoun किस चीज को रेफर कर रहा है? This is referring to this thing. Think of culture in a way, okay? लोगों का सोच जो है उसको रेफर कर रहा है. तो इनमें से ऑप्शंस में से आपका क्या है? Whenever you are in doubt, because reading filling the blanks, yes, there are grammar rules also, there are tips and strategies, but sometimes they are solved on the basis of your vocabulary. So what you can do in this case, you can use POE, which is process of elimination. I call this as our best friend forever. In process of elimination, you are going to eliminate the wrong options. अब हम एक एक फिट करके देखते हैं क्या सेंस बनता है. दिस बिहेवियर ऑफ कल्चर, कल्चर का बिहेवियर होगा. द आंसर इज नो. दिस कंसेप्ट ऑफ कल्चर, राइट? दिस समथिंग ऑफ कल्चर. और वैसे भी यहाँ पे जनरली अगर आपने हमारे ग्रामर लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो हम यहाँ पे जनरली नाउन ही फिल करते हैं, ओके? डेवलपमेंट ऑफ कल्चर फॉर एग्जाम्पल, राइट? प्रोग्रेशन ऑफ कल्चर, राइट? दिस अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है? जो यहाँ पे थॉट प्रोसेस है, ये क्या है? ये एक तरह से दिस इज अ कंसेप्ट, राइट? एंड कंसेप्ट इज अ नाउन. सो यहाँ पे आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, प्रोग्रेसिव भी नहीं कर सकते, रेयर भी नहीं कर सकते, कंबाइन भी नहीं कर सकते, रिफाइन भी नहीं कर सकते, ना ही सिविलाइज्ड और स्टेट करोगे. वाई? बिकॉज यू आर फीलिंग समथिंग एज अ नाउन, ओके? तो द आंसर विच इज लेफ्ट विथ यू, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज है, ग्रामर की नॉलेज है, यू नो यू आर गोइंग टू फिल नाउन.
और इनमें से सिर्फ आपके पास एक ही नाउन है, कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट ऑफ कल्चर. सो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू फिट ओवर हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन. ऑलवेज रिमेंबर, अब आपको क्या ये सारी लाइंस दोबारा पढ़ने की जरूरत है? द आंसर इज नो. अब यहाँ पे ब्लैंक से 3-4 वर्ड्स पहले एंड ब्लैंक के 3-4 वर्ड्स बाद आर इंपॉर्टेंट. ओके, तो सम कंट्रीज आर मोर समथिंग दैन अदर्स. ठीक है, कुछ कंट्रीज ज्यादा होती है. मोर क्या है आपका? कंपैरेटिव है. व्हेन इट्स अ कंपैरेटिव मतलब कोई चीज कंपेयर करेगा. अब यहाँ पे क्या चीज कंपेयर हो सकता है? मोर बिहेवियर देन अदर्स, सेंस नहीं बनेगी. मोर आर्ग्यू, नहीं सेंस बनती. मोर प्रोग्रेसिव, नहीं सेंस बनेगी. मोर रेयर देन अदर्स, यस बन सकती है, बट क्या यहाँ पे आप रेयरिटी की बात कर रहे हो? द आंसर इज नो. मोर कंबाइंड, मोर रिफाइंड भी सेंस नहीं बनेगी. मोर सिविलाइज्ड, यस. मोर स्टेट देन अदर्स, नहीं सेंस बनेगी. मोर सिविलाइज्ड. और वैसे भी आप देखिए यहाँ पे आप कल्चर की बात कर रहे हो, सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे अब आप ये बताओगे कि कुछ कंट्रीज दूसरों से ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं और कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा कल्चर्ड हैं. ठीक है, कल्चर्ड की रेफरेंस आ गई और यहाँ पे कल्चर की रेफरेंस तो चल ही रही है, राइट? सो और दूसरी रेफरेंस क्या चल रही थी? सिविलाइजेशन की. सो दैट्स व्हाई द आंसर फॉर हियर इज गोइंग टू बी civilized. Okay, now let's see the last one, which is progressive refinement of human something. अब आपको यहाँ पे अगेन ग्रामर रूल अप्लाई करना है. ह्यूमन समथिंग, ह्यूमन क्या लग रहा है आपको? इट्स, दो इट्स अ नाउन बट ओवर हियर इट्स एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव. ह्यूमन समथिंग, और ह्यूमन के साथ यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट होता है सबसे ज्यादा? बिहेवियर. एंड बिहेवियर इज आर noun also, and this is a collocation also, human behavior, right? So that's why अगर आपको आइडिया है कि एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है तो yes you can easily solve your answer, because आपको नाउन फिल करना है तो आप वैसे ही बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एलिमिनेट कर दोगे, बिकॉज आपके पास नाउन सिर्फ एक ही है. So that's why you are going to select behavior over here. Okay, now let's move on to the next one. For example, someone who used culture in this sense might something that classical music is more refined than music by working class people. अब समझ आए ना आए, यहाँ पे अब आपको सिर्फ फिट करना है. कंपैरिजन हो रहा है. अगेन मोर के लिए क्या होता है? कंपैरेटिव. अब क्लासिकल म्यूजिक क्या होगा कंपैरिजन में, और यहाँ पे आप रिफाइंड ऑलरेडी यूज हो चुका है. ठीक है, सो अब क्लासिक इन दिस सेंस, right, might what that classical music is more refined than music by working class people. So refined तो आप already eliminate कर दोगे. Okay, right? अब another important grammar concept, अगर आपको solve करने हैं blanks को, may might क्या हैं? models हैं. okay, और इनके साथ क्या use होती है? verb use होती है. may come, may go, may eat, may sleep, might come, right? so may और might के साथ क्या use होगी? verb. तो अब हमारे पास वर्ब्स कौन सी हैं? हम पहले प्रोग्रेसिव एलिमिनेट कर सकते हैं, रेयर एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स हैं. अनदर पार्ट ऑफ ग्रामर, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. ओके, सो स्टेट क्या है आपकी? नॉट द फर्स्ट फॉर्म. सो आपने वो भी एलिमिनेट कर दिया. अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं, आर्ग्यू या कंबाइन. और अब आप जब मोर और लेस की बात कर रहे होते हो, आप चीजें कंबाइन कर रहे होते हो या आर्ग्यू कर रहे होते हो कि हाँ मेरी मानना ये है, इन लोगों का मानना ये है. द आंसर इज आप आर्ग्यू कर रहे होते हो, राइट? So see, with the use of our process of elimination plus grammar knowledge plus vocab knowledge, we can easily solve this blank, and the answer for this one is going to be argue over here. Okay, now let's see if all the answers are correct or not. Yes, all the answers are correct. So you saw how easy it can be to solve reading filling the blanks if you know our reading filling the blank strategy. And what is our strategy? Our strategy is based on context, lexical resource and grammar. Context में first we do skimming, then there is a concept known as forward reading, backward reading, and बहुत बार हम tone के basis पे भी answers find out कर सकते हैं. Lexical resource में we have collocations, phrasal verbs and vocabulary. We have seen today a few words how we have to improve our
Vocabulary. Coming to the grammar. Grammar is a complete thing, and we provide complete grammar course for our students, which are having more than 30 lectures. And in those lectures, we teach you about parts of speech, subject-verb agreement, prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, British English rules. So this will be very helpful, and today you have seen how we could solve our answers on the basis of parts of speech. And this grammar course is going to help you in your writing as well as listening. Okay? Always remember, you have 2 to 2.5 minutes only to solve your reading filling the blanks. In first 30 to 60 seconds, you are going to skim the content, and then in next 90 to 120 seconds, you can use process of elimination, use the strategies which we discussed to solve your reading blanks. And the strategies which we teach are validated and proven strategies. Proof is in the ticker below. So many students have achieved their target score. So if they can achieve, you can also achieve your target score. And these are some of our recent success stories where students have scored 90 also, 87, 86, 82, 81. So if they can score, you can also score. This is our WhatsApp number 8699121121. If you have any question or doubts, you can contact us if you want to take online or in-institute coaching. And do not forget to subscribe to our channel. We give wings to your dreams.